क्या चीज? अनुराग, मुझे लगा था कि ये सारे जो सवाल होते हैं जो दे पुश यू टू द कॉर्नर इज डन वेरी वेल बाय द प्रेस. आप तो हमें वो स्कोप ही नहीं छोड़ रहे हैं. यू आर आस्किंग अस एवरीथिंग पॉसिबल. नहीं, पर इसीलिए पूछ रहा हूँ कि उनको मौका न दूं ना यार, जो है यहीं निपटा लेते हैं ना हम लोग यार. कि क्यों? नहीं, अभी तो ग्रिलिंग सेशन शुरू होगा, मुझे मालूम है, यू नो. बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक ट्रेलर देखने के बाद में आपको ऐसा कहीं नहीं लगा होगा दैट द फिल्म इज एक्चुअली, आई मीन these moments are dominating this trailer because फिल्म की स्टोरी इतनी कड़क है कि आप एक बार भी नहीं आपको लगेगा कि ज़बरदस्ती डाल. आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म एंड आई होप यू ऑल्सो फाइंड इट इक्वली इंटरेस्टिंग. देखो यार, पूछना हो तो मैं पूरी रात पूछ सकता यहीं बैठी है, ये सवाल मत पूछो, बाद में बताऊंगा. टेलीफोनिक इंटरव्यू. मेरी बीवी नहीं, मेरे फादर इन लॉ भी बैठे हैं यहाँ पे. तो खास वजह ये कि ये स्क्रिप्ट एक्साइट करती है मुझे. मुझे लगता है कि कुछ करने के लिए होगा, यू नो, देयर समथिंग. और बाकी सारी जो टिपिकल फिल्में हैं, मुझसे लगता है कि मुझसे कहीं ज़्यादा काबिल लोग कर रहे हैं. तो एक जॉनर है जो मुझे बहुत एक्साइट करता है हमेशा से, और मुझे लगता है कि मैं, यू नो, आई विल बी 100% इन देयर. और कभी डेलिबरेटली नहीं सोचा था मैंने कि मैं इस तरह की फिल्में करूँगा, बट जब स्क्रिप्ट आती हैं तो पता नहीं क्यों इस तरह की फिल्में, यू नो, आर द फिल्म दैट रियली एक्साइट मी. सो एज लॉन्ग एज आई एम डूइंग अ गुड जॉब, आई थिंक शुड नॉट बी. जी. जी. मैं प्रोजेक्ट्स को देखता हूँ, मैं मीडियम को नहीं देखता हूँ. मुझे अगर प्रोजेक्ट एक्साइट करता है तो मैं वो प्रोजेक्ट ले लेता हूँ, चाहे वो टेलीविजन हो चाहे वो फिल्म्स हो. थिएटर में कुछ एक्साइट करेगा तो मैं वो भी करूँगा, बट आई थिंक मोस्टली आई पिक अप प्रोजेक्ट्स विच रियली एक्साइट मी. आई डोंट रियली लुक एट द मीडियम. तो अगर आप देखेंगे कि मैंने जो जितना भी काम किया है, कभी यहाँ कभी वहाँ, सो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट द प्रोजेक्ट. इट्स हाउ मच यू रीच आउट टू पीपल. हमें कोई डर नहीं है, उन्होंने सब काम कर दिया हमारे लिए. In suspense that way, by the way, you know. Yeah. But while shooting, I wasn't prepared for that sequence to come all of a sudden, you know, and that, I think on day one. So we knew it, and he had a certain pattern of shooting the film. So I wasn't really prepared for it then, but he never kept us under suspense or in No, suspense. actually, add to that, and I don't want this mic. Thanks. I'd like to add to that कि जब मेरी पहली मीटिंग हुई थी आरजे, आई कॉल हिम आरजे क्योंकि सेट पे बड़ी कंफ्यूजन होती थी, राजीव एंड राजीव, सो आई यूज्ड टू कॉल हिम आरजे. सो आरजे इन द फर्स्ट मीटिंग इटसेल्फ हैड टोल्ड मी कि देखो ये सीन है एग्जैक्टली स्क्रिप्ट से एक लाइन ज़्यादा नहीं, एक लाइन कम नहीं. ये रिक्वायरमेंट है, क्यों रिक्वायरमेंट है, और इसके अलावा आई विल नॉट बी एबल टू कास्ट, सो यू हैव टू बी कम्प्लीटली कंफर्टेबल विद दैट. एंड जैसे राजीव ने बताया कि फिल्म में ऐसा कोई भी एक भी आपको ऐसा सीन नज़र नहीं आएगा जो ज़बरदस्ती हाँ इफेक्ट के लिए डाल दिया गया हो. इट मेक्स सेंस टुवर्ड्स द एंड ऑल्सो, राइट एट द बिगिनिंग ऑल्सो यू विल से अच्छा दैट इज़ वाई दिस हैपेंड. In fact, my mom is sitting right here, and जब मैंने स्क्रिप्ट नरेशन हुआ था मेरा, आई वेंट होम एंड आई टोल्ड मॉम, फाइनली एज एन एक्टर्स करियर में वो मौका आ गया है जब शायद मुझे ये करना पड़ेगा. द स्क्रिप्ट इज फैंटास्टिक एंड माय मॉम सेड हाँ अगर स्क्रिप्ट में इट मेक्स सेंस एंड इट्स ओके विद यू टू परफॉर्म देन यू गो हेड एंड डू इट. हिम्मत नहीं बन रही थी टू सिट नेक्स्ट टू हर एंड वॉच इट, सो आई वेंट राइट एट द बैक टू वॉच द ट्रेलर, बट शी इज स्माइलिंग, सो आई एम गेसिंग इट्स ओके. Maybe I can connect both the questions together. It's about the sex thing also that she's talking about. See, because when I wrote the script and I approached Gemma and approached Katrina, there is a very, like a detailed clarity when you speak to them. Like every moment is explained in the script. And they understand it and then it is performed because they kind of read the entire script in its entirety. And then they perform. So that's the clarity of that why are we doing what we are doing. And maybe which also Rajiv will kind of back me on that is that they are so
unself-conscious, if there's a word, or so kind of selfless when they're performing, or when thing is going to happen, that it takes that sex away from it. It becomes a passionate moment rather than a sex scene. Right, so it was, and similarly with Gohar, but also the point is that sometimes you don't need to say it. Like I remember this one particular scene. I will not go into detail when Gohar is there, and yeah. So I had to in between the take, because obviously I would have music on, that kind of a thing. I just in between said, just go ahead, just go ahead, just But she trusts the script, so she goes ahead. So that's the kind of trust that you have to have in the script and the person who's directing the film. Then it just becomes a part of the story. It doesn't kind of stand out as a sexual object, if I can call that. Yeah. Thank you for asking. I think, yeah, that would is the kind of a thing that comes from the trailer. No, can I say that with a lot of humbleness, that this is a complete original script, and that's why I had to really work hard, because it's a difficult script to kind of comprehend and initially, but visually kind of it translates much easier. But no, it is not. It's completely original, and I had to keep that in mind because I was approaching people who are part of different Hollywood and European industry, and I don't want to cut a short. And also Switzerland. The entire film is backed by the Swiss government, the canton of Valais, which is entirely to shot. And for the first time, perhaps after Yashji has kind of patented Switzerland, for me to go again to Switzerland and get the backing from them to get the kind of visuals that I wanted to was a big thing for me. So the originality was very, very important, because I cannot go to any international actor saying, look, honey, this is a kind of a inspired script. So it is completely original. और दूसरी बात ये कि स्विट्जरलैंड में गए नहीं हैं, ये पूरी कहानी स्विट्जरलैंड की ही है। तो मतलब ये नहीं कि चलो यार 2 गाने के लिए स्विट्जरलैंड हो गया